we start with the persistent state of package. So what is that? Persistent state of a package, the collection of public and private package variable. It represent the package state for a user session. Okay. The collection of public and private package variable. The variable that you define in a package, like if it is public or it is private, it represent the state of the package state of a user session. That is, the package state is the set of value stored in all the package variable at a given point in time. Okay, so that is a package state is the set of value stored in all the package variable at a given point in time. In general, package state exists for life of the user session. User session means what? You are login your account, आप जो SQL सर्वर आप लॉगिन कर रहे हो, तो उसमें जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो और जो भी वैल्यू आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, दैट वेरिएबल वैल्यू इज एग्जिस्ट और प्रेजेंट फॉर दैट सेशन ओनली. When you sign out, then there is a no requirement of that variable value. It is also destroyed. Okay, the variable means what? The variable means the value is changes throughout your program execution. जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहता है, PL SQL सब चलता रहता है, तो that is present over there. Okay, so that is a package state is a set of values stored in all the package variable at the given point in time. In general, the package state exists for the life of a user session. Package variable are initialized the first time a package is loaded into the memory for a user session. The package variable are by default unique to each session. तो each session मतलब क्या है? आप जब लॉगिन करते हो तो हर एक सेशन का पैकेज वेरिएबल यूनिक होता है and hold their value until the user session is terminated. In other word, जैसे कि आप मान लो आप फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, तो आप आईडी पासवर्ड दिए, तो once you are giving your ID password, you can access all your application. You are going to your profile, you can upload the video, okay, and you what making a post over there. Okay, so means your login ID and password is valid for the particular point of time. जब आप साइन आउट कर देते हो तो आपका क्या होता है ना, फिर से आपको एक आईडी और पासवर्ड फिर से देना पड़ता है. जब तक आप साइन आउट नहीं करते हो, योर sign in information, your login ID and password, it is present in the variable and it is exist when you are in the Facebook. जब तक आप लॉगिन रहते हो तो आईडी और पासवर्ड जो स्टोर कर रहे हो वेरिएबल में वो यूज होता है बोलो. ओके, और जहां पर आप साइन आउट कर देते हो तो एट दैट टाइम इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. वो वेरिएबल का वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया. You can again reinitialize it. Okay, package variable are initialized in the first time the package is loaded into the memory for a user session. The package variable are by default unique to each session and hold their value until the user session is terminated. In other words, the variable stored in the user global area memory allocated by the database for each user session. The package state changes when a package subprogram is invoked. Its logic modify the variable state. Public package state can be directly modified by the operation appropriate to its type.
But when you define a variable as public, so it can be modified by any user. Okay, and when you define a variable as private, then it is not modified in the other packages. आपका जो login ID और password है, that is a what? That is a private. So you having the authenticity to change your password. Here, next comes to pragma. So pragma signifies that the statement is a compiler directive. Pragma are processed at compile time. Pragma specifies that the statement that you have passed, the statement is a compiler directive. Pragma are processed at compile time, not at runtime. They do not affect the meaning of a program. They simply convey the information to the compiler. If you add pragma serially reusable to the package specification, then the database stores a package variable in the system. Okay. So if you add pragma serially reusable to the package specification, then the database stores the package variable in the system global area. System global area is what? Where database or Oracle is allocating a memory where you store your variable value. Okay, like your यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो मोबाइल में आप फेसबुक का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे रहे हो, तो एवरी टाइम व्हेन यू ओपन द फेसबुक ऐप इट इज नॉट आस्किंग फॉर यू टू री लॉगिन इट. If you sign out, then it is asking you for re login it. But here what happened? You store what? You give your user ID and password. It is stored in a user what SGA system global area. तो वहां पर आपका जो आईडी और पासवर्ड है वहां पर आपका वैल्यू स्टोर हो रहा है. ओके, इन दिस केस the package state is maintained for the life of a subprogram call or a single reference to a package construct. The serially reusable directive is useful if you want to conserve memory and if the package state doesn't need to persist for user session, for each user session. Serially reusable इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई भी गूगल ब्राउजर में जीमेल लॉगिन करते हो और फेसबुक लॉगिन करते हो, वहां पर एक ऑप्शन आता है दैट रिमेंबर माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड. ओके, तो आप लॉगिन किए, अगर आप रिमेंबर माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप क्लिक कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम वही अकाउंट से अगर आप ओपन करते हो www.gmail.com, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एंड इट इज नॉट आस्किंग फॉर यू द आईडी एंड पासवर्ड. Okay, so that we're using serially reusable component. The pragma is a appropriate package as serially reusable. If a package has a specification and body, you must mark both. You cannot mark only the body. Okay. The global memory for serially reusable package is pooled in the system global area, not allocated to the individual user in the user global area. It is disconnected. The screen is visible.
ना सर देखो सभी देखा है ला The global memory for serially reusable package is pooled in the system global area. The global memory means where everybody can store the value. The global memory for serially reusable package is pooled into the system global area. It is not allocated to the individual user. So that's why the package work area can be reused. So what is the statement is saying that the global memory for serially reusable package is pooled into the system global area. It is not allocated to the individual user. ग्लोबल मेमोरी में क्या होता है ना, सपोज आप आपका फेसबुक का आईडी और पासवर्ड दे दिए एंड नाउ यू डोंट वांट टू रीलॉग इन योर ऐप अगेन एंड अगेन. मतलब जब आप फेसबुक ओपन करोगे वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, आपको आईडी और पासवर्ड अगेन एंड अगेन आपको नहीं मांगेगा. तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया ना, ग्लोबल एरिया. तो इट इज पूल्ड टू द सिस्टम ग्लोबल एरिया. ओके, ग्लोबल मेमोरी से आकर आपका सिस्टम जो ग्लोबल मेमोरी एलोकेट किया है, मतलब आपका मोबाइल में जो मेमोरी एलोकेट किया है यूजर आईडी और पासवर्ड स्टोर करने के लिए, वहां पर आपका स्टोर हो गया. ओके, इट इज नॉट एलोकेटेड टू द यूजर ग्लोबल एरिया. ऐसा होता है जो फेसबुक आप ओपन कर रहे हो आपका मोबाइल में, कोई दूसरा यूजर आकर आपका ओपन कर देगा. सपोज मैं चाहूंगा आपका मोबाइल में मेरा अकाउंट ओपन करने के लिए, तो ये नहीं होगा. आपको साइन आउट करना पड़ेगा, फिर आपका लॉगिन उसको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आई विल गिव माई इंफॉर्मेशन, माई आईडी एंड पासवर्ड. सो माई आईडी एंड पासवर्ड इज स्टोर इन द SGA, system global area. So that why the package work area can be reused. When the call to the server end, the memory is returned to the pool. Each time the package is reused, the public variable are initialized to their default value to null. Okay, its public variable are initialized to their default value, which is setting to as a null value. I think I able to make you understand this part. ये समझ में आया? Any doubt? So persistent state of the package variable. At 9, Scott call reset com with a new commission value of 0.25. The package state of the commission is initialized to 0.10. Then it's set to 0.25, which is validated because it is less than the database maximum value 0.4. See that at 9 a.m.
Scott execute the comp package. He is defining a variable 0.10, 0.25, and maximum value he will give 0.4. It's saying that Scott called the reset commission. Okay, we're calling the reset commission package with a new commission value 0.02, 0.25. तो previously it is 0.10. अभी क्या वैल्यू है 0.25. देखो यहाँ पर कौन सा पैकेज को कॉल किया, रिसेट कॉम पैकेज में रिसेट कमीशन फंक्शन को कॉल किया. जो पहले वैल्यू था 0.10, न्यू वैल्यू है 0.25. ये वैल्यू मैंने पास किया. The initialized value is 0.10 and then it is stored to the 0.25, which is validated as it is less than the database maximum value 0.4. मतलब 0.10 से 0.25 वो अपडेट किया, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम क्या दिया गया है 0.4 से ज्यादा नहीं होगा. बट ओके, यहाँ पर स्कॉट का 0.4 से ज्यादा नहीं होगा. So at 9:30, Jones insert a new row into the employee table with a new maximum commission percentage value that is 0.8. This is not committed, so it is visible to the John only. Scott state is unaffected. Okay. In 9:30, John is inserting the value 0.8. ओके लेकिन ये जो 0.8 जो नया वैल्यू है ये किसको नहीं दिखाएगा, स्कॉट को नहीं दिखाएगा, because it is not committed, so that the value that John is updated, it is only visible to the John. Okay, it is not visible to the other user, because the maximum value that we set, that is 0.4, for whom? For Scott. Scott cannot be visualized the value that is more than 0.4. Okay. Next, another scenario. In 9:35, John called reset commission with a new commission value 0.5. The state of John v underscore std commission is first initialized to 0.10. Then it is set a new value to 0.5 that is valid for this session with a database maximum value is 8. At 9:35, John. Okay, John is initialized the value. Which value it is initialized? 0.5. Previous value is what? 0.10. Now he is initializing 0.5. So it is valid. Why it is valid? Because for John, the maximum value that it is given, that is 0.8. Here. Then comes to next part. At 10, Scott call reset commission with a new commission value 0.6, which is greater than the maximum database commission visible to this session, that is 0.4. Okay, and John did not commit the 0.8 value. At 10, Scott is initialized 0.6. It shows an error, that is bad commission, as because the maximum commission that is given, that is 0.4.
Now some transaction is happened between 11 to 12. Between 11 to 12, John roll back the transaction and exits the session. John log in at 11:45 and successfully execute the procedure, setting his state to 0.2. Here, John is rolled back. Is what are the things Jones has done is roll back it because it is not visible, is going out of the maximum value. Okay, so that it is roll back that information. Okay, now I am showing you the example of cursor package. So here we define a package, create or replace package where open the procedure open. Then we're defining a function next, which is contain a parameter procedure is pose. Then end of the cursor package. So here I am defining the package specification. Now here I define the package body. Before that, I am creating a table which is helping you. My table is created here.
then create a replace package body by defining a package record. अगर आपको multiple record आपका retrieve हो रहा है तो cursor name, okay, then select employee ID from employees, procedure is open, if not cursor is open then open the cursor, end it, then end open. Okay, then यहाँ पर डिफाइन हो गया ना एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय काउंट इन लूप वैल्यू 1 है तो यहाँ पर अच्छा होगा 1 जितना भी आईडी है वो अगर आपका तो एट दैट टाइमिंग इट शो नॉट cursor is then your and procedure is closed here. Begin if cursor is open then close the cursor. अगर आपका cursor open है then close कर दो. Now मैं इसका body को execute कर रहा हूँ. मैंने cursor is open now. बाद मैंने value pass किया. Valid cursor मैंने कितना वैल्यू 3 वैल्यू तो ये 3 वैल्यू यहाँ पर आ जाए सपोज यहाँ पर मैंने it is execute there is giving you 10 letter. Okay, is it out? Then close the procedure. In procedure के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया. फंक्शन का नाम है नेक्स्ट जो आपका रन टाइम में वैल्यू लेगा. अगर आप रन टाइम में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हो तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहेगा. मतलब सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा एंड रिटर्न द बुलियन वैल्यू. देन यहाँ पर पैकेज का जो बॉडी है यहाँ पर डिफाइन किया गया cursor name is cursor underscore c is select employee id from employee. तो कर्सर डिफाइन हो गया. उसके बाद कर्सर के बाद क्या होगा प्रोसीजर को ओपन किया जाएगा. प्रोसीजर में जब ओपन होगा प्रोसीजर में हमने क्या डिफाइन किया प्रोसीजर का प्रोसीजर में इधर मैं कर्सर को चेक करूंगा नहीं है तो कर्सर को defining a variable which is retrieved